Okay, we'll start in 5 minutes. We'll wait for everyone to join. Yeah. Yeah. Okay. तेजल मैम, मतलब हम अगर कुछ पूछना चाहते हैं या क्लास है नहीं है, अपडेट्स कहाँ पे डालते हो आप लोग? इज देयर एनी समथिंग ग्रुप ऑन टेलीग्राम और सॉरी, व्हाट्सएप? क्या चाहिए आपको? हेलो, हाँ, नहीं, अगर यस। अपडेट हमारा कुछ ग्रुप नहीं है क्या बैच का, कि जहाँ पे हम अपडेट्स पूछ सकते हैं? आई थिंक मैं उस ग्रुप में हूँ ही नहीं, तो यस यस, अभी ये वीक में विल फॉर्म अ ग्रुप. सो बेसिकली ये फर्स्ट 2 वीक्स आपका डेमो था ना, ट्रायल था, फ्री ट्रायल. सो वंस हम्म. या एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड, वी विल क्रिएट अ ग्रुप इन दिस वीक. ओके, नहीं तो डायरेक्टली आप ओके मुझे नहीं ओके, तो वैशाली मैम को कांटेक्ट कर सकते हो. यू कैन कांटेक्ट मी और यू कैन बट कांटेक्ट आई डोंट वैशाली मैम. हैव नंबर. हैव योर नंबर. ठीक है. डू यू हैव अ नंबर वैशाली मैम का? नो नो, ओके. तो डोंट नी. या जस्ट इन केस यू कैन कांटेक्ट मी और वैशाली मैम. यस, विल जस्ट आप स्टार्ट इन टू नंबर दे मिनट. सकते हैं क्या? तेजल. हाँ हाँ हाँ. मैम, ये नंबर आपका है या वैशाली मैम का है? मेरा है, मेरा है. ओके. ओके, चलो. ऑलराइट, स्क्रीन विजिबल? यस ओके. You were not there for last 1 or 2 lectures? यस यस, आई मिस्ड 2 Okay. lectures on Friday and on Monday. Okay. All right. Let me just check a few things. Okay. All right. आपने recordings देखे? Did you check the recordings for last 2 classes, or they're not available yet? Not available yet. Okay. All right. Fine. So basically, in the last classes, we covered array in JavaScript. We covered the, okay, we did not cover the map method. We covered how to
access different array elements, etc. Today, basically, mainly we will going to cover objects in JavaScript and functions in JavaScript. These are the two main points to cover today. Rest, we will take a look at asynchronous methods, async methods, and arrow functions. Okay, these are the few points that we will cover today. And if possible, we will also cover promises. So almost 95% of the JavaScript we will try to cover today, and then we'll create a small project in JavaScript to conclude the entire JavaScript syllabus, including everything we have learned. We'll cover a small JavaScript project today or tomorrow or day after tomorrow. So we can conclude JavaScript and then we can move on to rest of the things. Okay, fine. We'll start with objects in JavaScript. Let me open the online whiteboard for you. Okay, it's loading. Objects in JavaScript. Basically, objects in real, like there are objects in real life, they have properties, etc. In JavaScript, also the objects have different kind of property. Object matlab anything. It can be a laptop, pen, pencil, mobile phone, car, table, painting, bed, pillow, whatever it is. Everything around us is made up of objects. Correct. So in JavaScript also everything is made up of objects, and that object has different property. For example, our mobile phone has model, color, battery life, company, etc. So for example, there is a object cars, or there is an object car. What different property does a car have? A car has a color, model, company. Okay, model, color, company, weight of the car, for example, price of the car, etc. Okay, so your car is our object, and an object has different kind of properties, and these are the properties of the car. These are the properties of the car. Okay, basically in JavaScript, basically in objects in JavaScript, the value or the information is stored in the key value pair. So color is the key and red is the value. Model is the key and I-20 is the value. Okay, so key value pair. Wait, whatever it is. 1003G.
and price, whatever. Okay. Car is an object, and the information about the car, more information about this object or more information about the car, it's saved in the key value method. Key value method. All right. Let's see how objects look in JavaScript. Just a minute. In a normal variable, let car is equal to I20. We can only store we can only store one value. Okay, but in objects we store multiple properties of the object and in a key value pair. So if you want to create a car object, what is the syntax? Basically you have to write the properties in curly brackets. Okay, and inside the curly brackets we'll write the key value pair, whatever we have written over here. Exactly same thing we can write in. Okay, this is because it needs a comma after every property. Perfect. This car is a object and key value pair. The more information about the car, the properties are written in the key value pair like this. So this is an object in JavaScript. This is object in JavaScript. Okay. How to create a new object? You can create a new object using this new keyword. In the array class, when we took a look at array, we have seen this new keyword over here. Okay, basically if you want to create a new object, we can use the new keyword in JavaScript. For example, here we don't need it much. Okay, so you have to create a object named as person. So let person is equal to, instead of directly doing giving curly bracket, which means it's automatically an directly giving curly brackets so that it automatically becomes an object, we can do new, and you have to create a new object, so you will write new object like this. Okay, that now, which means people is a new object. Empty, it is empty, but it is an object. Now if I want to add different properties to the object, so I can write people dot. Okay. Why dot? I will show you that later. But first, this is how we create a new object using new keyword.
You are not audible, Sejal ma'am. Okay. Audible now? Yes. Okay. All right. So let's just do console.log car, and we will see what we can. We'll check what we can see in the console. How the object is displayed in the console, that we will see. Okay. Let us open this in the browser. Uh, what happened? Oh, console.log car we want to do. Okay. All right. See. This is how our object appears on the console.log. Color red, company, model, price, weight, etc. Okay. Now, if I want to access one particular value, for example, I want to say console.log, the price of I-20 is. I want to access the price, this property. So how we can access information inside the object? We can do it like this. Car, name of the object, dot means you want to access something which is inside the particular object. So inside the car, I want to access this price property. See, the uh, price of I-20 is 10 lakh. Okay, so using the dot variable, using the dot operator, we can access the properties inside of an object. Okay, कार के ऑब्जेक्ट में के अंदर कोई भी आपको कुछ भी एक्सेस करना है, we use the dot operator. So here we have created a new object of people, and now I want to start filling or adding properties. Abhi, right now I have only created an empty object. This is empty. I want to add some data or property inside this object. So what we can do is people dot first name is equal to my name, Sejal, for example. People dot age is equal to, okay. So that means what we are doing inside the object, we are creating this property and we are giving it the name. So right now, if I do console.log people, this is what we will get, age and first name. Okay. This is how objects in JavaScript look. This is how you can access the information about inside the objects in JavaScript. Using the new keyword, this is how you can create new objects, etc. etc. Okay. So basically, technically, objects are
called instances of class. What is a class? We have not seen yet. We have not seen what is a class right now. Okay. But just for your knowledge, objects are called as instances of class. Okay. We'll see what this means later. We will check. Okay. So yes, um, we will take a look at functions now, and then we will dive deep into more. We will learn about objects and classes. First, we will now get to know about functions. Anyone in the chat box? What are functions in JavaScript? What are functions? Why do we use functions in JavaScript? Any idea? Any guesses? Sorry, anyone wants to say anything? Yes, functions. I haven't. I'm audible. Hello. Hello, yes. You're not audible. You can type in the chat box. Okay, ठीक है. Let's continue. So basically, as I told you in the last class, there is some block of code, some few statements. Statement one, statement two, statement three, etc. There are a few because वो alphabetically print होता है ऑब्जेक्ट्स में. उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अल्फाबेटिकली प्रिंट होते हैं. ए कम्स बिफोर एफ, दैट्स व्हाई ए पहले आया. एंड देन यू कैन सी in this car also you can see same thing happens. Alphabetically it displays. ठीक है. ऑटोमेटिकली वो रीअरेंज होके उसके प्रॉपर्टीज अल्फाबेटिकली हमको दिखते हैं. ओके, क्लियर. फर्स्ट नेम एंड एज क्यों उल्टा हुआ? इवन हियर वी हैव रिटन प्राइस एट द लास्ट, model second, but it will appear yes, alphabetical. ठीक है. So I was saying there are a few set of instructions. For example, you have to make a tea. You have to instruct. There is a robot. ठीक है, you're working with a robot. You have to give some instructions to the robot to make tea. ठीक है. तो कैसे चाय बनाते हैं हम लोग? First take some water. Second is boil tea leaves and sugar. ठीक है, फिर बॉईल करो उसको. देन यू कैन ऐड वॉट एवर यू add ginger or whatever you like to add. Sugar, you add it in. Oh, sugar तो हो गया हमारा. Okay. Fourth is add milk. Fifth again थोड़ा सा और बॉईल करो उसको. Sixth is तो उसको स्ट्रेन करना पड़ता है. स्ट्रेन एंड सर्व इन कप. ठीक है. These are the instructions of making a tea. These instructions you have to give to a robot. ठीक है, clear?
Now, whenever you want to make a cup, you want a cup of tea. So बार बार will you repeat these six instructions to the robot? कि first take some water, second boil tea leaves and sugar, third add ginger, fourth add milk, fifth boil, strain and serve. दिन में 3 बार if you have the tea, if you drink tea 3 times in a day, will you repeat these six instructions 3 times a day again and again and again? No. What will you do? You will enclose this in a block. Block of code matlab I told you in the on day one. Block of code matlab whatever you write between curly brackets, ये बन जाता है ये बन जाता है आपका ब्लॉक ऑफ कोड. ठीक है, ये बन जाता है आपका ब्लॉक ऑफ कोड. ओके. Now you will enclose these six steps in a block of code and उसको एक नाम दे दोगे आप. You will give a name to that block of code. For example, I have given the name make tea. ये six instructions को मैंने एक नाम दे दिया कि make tea. So whenever you now 3 times a day you will only say make tea and the robot will automatically follow all these instructions step by step, one by one. ऐसे नहीं कि first sixth last step पहले कर दी, फिर third step कर दी, फिर first step कर दी. No. Whatever sequence you have written, it will follow all the instructions in sequence. Now you don't have to give all the 6 steps again and again. You just have to say make tea. ओके. एंड ये कब कंटिन्यूस दिन भर बनाएगा ये चाय? जैसे हमारा फॉर लूप है, फॉर लूप विल गो फ्रॉम 0 to 100 एंड कंटिन्यूसली मेक 100 टी. बट डू वी वांट दिस राइट नाउ? नो. व्हाट डू वी वांट? इफ आई से मेक टी, देन ओनली इट विल फॉलो दिस 6 स्टेप्स एंड मेक मी अ कप ऑफ टी. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का. यही कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का. whatever statements or whatever code you want to be repeated again and again, that you write inside a function, you make a function out of it. Okay, so उसका syntax क्या है function का? We'll write function, we'll give a name of function. ठीक है, जैसे हमने ये 6 instructions को एक नाम दे दिया make p. Similarly you will give a name to the function. Block of code, बस it is a function. So JavaScript में after every function you will see these two curly brackets. After every function you will see these two curly brackets. ठीक है, ये सिंटैक्स है एंड फिर इसके अंदर आप लिख सकते हो आपका कोड. जो भी आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं, जो भी स्टेप्स लिखने हैं, whatever you want to write, you can write inside this. Okay, so there are two steps of writing a function. First is declaring a function. Second is calling a function. ठीक है, तो आप डिक्लेयर कर रहे हो मतलब आप लिख रहे हो कि मेरा फंक्शन का व्हाट विल बी द नेम ऑफ योर फंक्शन, व्हाट विल बी द कोड इनसाइड योर फंक्शन. ओके, सो यू आर डिक्लेयरिंग अ फंक्शन. ये स्टेप हो गया हमारा. यू विल राइट फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन, राइट द कोड, एवरीथिंग. बट राइट नाउ योर फंक्शन और आपने फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है, it will not be executed. It will not be executed. See, let's try. Function print, for example, print something. Okay, ये हो गया हमारा फंक्शन का सिंटैक्स. फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन, curly round brackets, and यहाँ पे I will write console.log. I am inside the function. Again I will write something, console.log last line of
फंक्शन, इसके बीच में आई विल राइट console.log, I will follow some steps. Okay, whatever कुछ XYZ लिखा है मैंने इसके अंदर. So will we be able to see that on the screen? Console.log में दिख रहा है these sentences. Can you see this in console.log? No. Why not? Yes, anyone in the chat box? What should we do? क्यों नहीं दिख रहे मुझे स्क्रीन के ऊपर? Yes, correct. कॉल नहीं किया. We have just written the steps, but उससे कुछ नहीं होगा जब तक we will not say make tea. ये instructions मैंने सिर्फ लिख के रखे हैं. Like our moms or recipe, our moms write some recipe in the notebook. Correct? Notes होते हैं recipe के etc. So she has written some notes कि ऐसे ऐसे चाय बनाते हैं. Unless and until you make it, बनेगा नहीं ना. तो वैसे ही we have written, we have declared a function over here, declaring function. Whenever you want this function to execute, whenever you want to this function to run, you have to call the function, print something. Okay, call कैसे करना है? Name of the function, what is the syntax? Name of function and these round brackets. Now you can see on the screen, I am inside the function, I will follow some steps, last line of the function. जो सीक्वेंस में हमने लिखा था वही सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होने वाला है. Okay, we have written function, we are calling the function. Simple. Now where can we use these functions? Calculator app है. So in the calculator app, hundreds and thousands of time we need to add something. 100 times हमको ऐड करना पड़ता है कुछ ना कुछ, एनी रैंडम नंबर्स, बट वी हैव टू ऐड. तो वो एडिशन कैसे परफॉर्म करना है उसका स्टेप्स आपको लिखना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू राइट द स्टेप्स कि ऐसे ऐसे एडिशन परफॉर्म करना है, जितने भी नंबर से उन सबको आपको ऐड करना है एक्सेट्रा. एंड whenever the user will click on the plus button, that time आप हम लोग add function call करेंगे and then the addition will be performed. So basically you have ऐसे कोई instructions है जो आपको बार बार perform नहीं करने हैं. Just whenever you require, you will call the function and उसके अंदर जो भी लिखा है वो execute होना चाहिए. Okay, so let's try one more function. Function add. Okay, so here I can take two variables. Let x is equal to 10. Let y is equal to 30. And I will do let answer or addition is equal to x plus y. Console.log addition. ठीक है, ये मैंने एडिशन का फंक्शन लिखा कि वी हैव टू वेरिएबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर एक एडिशन वेरिएबल में हमने उन दोनों का एडिशन सेव कर दिया है एंड वो प्रिंट कर दिया है. ओके, whenever I will call the add function, then only these steps will be executed and you can see the addition is 40, 10 plus 30. ठीक है. Now यहाँ पे अगर मैंने multiple times
add function. एक तो second thing is you can call the functions by any number of time. Infinite 10, 15, 1000 बार, कितने भी बार आप ये फंक्शन को कॉल कर सकते हो. You will get the result. सी 40 40, 2 बार 40 आ गया. क्यों? क्योंकि मैंने ये फंक्शन 2 बार कॉल किया. बट इसका 2 बार कॉल करके यूज ही नहीं है, मुझे तो सेम आउटपुट मिल रहा है. ओके. So the functions are kind of useless if they don't have some parameters. Parameters means extra information that we pass to the function. Extra information मतलब now there is no point 10 that it's not necessary कि हमेशा यूजर को 10 and 30 का ही एडिशन करना हो. यूजर कैन मेक 100 plus 32, 100 plus 36, whatever. ठीक है. तो these numbers are not fixed. 100 and 36 ये नंबर फिक्स्ड नहीं है. ओके. सो ठीक है, इसको हटा देंगे हम लोग. ओके. So whenever I call the function, semicolon. So basically, in the new line, when you go to the new line, it will understand that it is a new instruction. इसके आगे ही आप लिखोगे सेम लाइन में तो नहीं पता चलेगा. ऐसे आप लिखोगे तो नहीं पता चलेगा. यहाँ पे फिर आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा. इफ यू वांट टू राइट इन वन सिंगल लाइन, देन यू हैव टू गिव सेमीकोलन. बट इफ यू आर राइटिंग इन द न्यू लाइन, तो न्यू लाइन मीन्स इट इज कंसिडर दैट इट इज अ न्यू इंस्ट्रक्शन. ठीक है. एक ही लाइन में आपको लिखना है तो सेमीकोलन देना पड़ेगा. न्यू लाइन में जा रहे हो तो इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपल्सरी. ओके. So, yes, from this function, whenever I'm calling the function, I need to send some data. Send some data मतलब यूजर को कौन से 2 नंबर का एडिशन करना है, वो 2 नंबर मुझे सेंड करने हैं मेरे फंक्शंस को. ओके. सो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन, एक्स वाई नाम के we will take a parameter. XY we will take 2 parameters. Parameters means extra information that we will pass. And while calling the function, we will pass here some 2 numbers, 28 plus 78. So whatever numbers we will pass from here, 28 जाके x में सेव हो जाएगा, 78 जाके y में सेव हो जाएगा, and then x and y का एडिशन होगा यहाँ पे, मतलब 28 and 78 का यहाँ पे एडिशन होगा, and that addition will be displayed on the screen like this. Okay. See, these are parameters and you can give different parameters every time. अभी next time मुझे 54 and 88 की addition करनी है. 54 plus 88. So next time whenever you call the function, you can give different parameters, you can give different data, and you will get a new answer. Now this is the real use of function. Every time are you going to write this formula, addition is equal to x plus y and this and that? No, I will just call the add function. Whatever numbers you want to add, you can pass over here. We can add 3 numbers also. We can do x, y, z. So we can do add any 3 numbers also. You can give 3 parameters, and here you can give add x plus y plus z. Okay, whatever you want to see. ठीक है. Parameters are clear to you? What are parameters? How we send parameters? What is the actual use of parameters in functions? Without parameter तो फिर बहुत function का use का limitation है. With parameters we can do wonders with functions.
चलो, एनी डाउट टिल हियर? Functions is clear, parameters is clear. Okay, very nice. Just give me a minute. ठीक है, चलो. Okay, objects and functions are clear. So ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है, वो हम लोग ऑब्जेक्ट में भी ऐड कर सकते हैं. नॉट ओनली प्रॉपर्टीज, बट ऑब्जेक्ट्स कैन डू समथिंग ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, योर मोबाइल फोन कैन कॉल समवन, प्ले म्यूजिक, योर कार कैन स्टार्ट, स्टॉप, एक्सिलरेट, एक्सेट्रा. करेक्ट? सो हमारे ऑब्जेक्ट्स में instead of only properties we can add functions also. कैसे कर सकते हैं वो हम लोग functions? See that directly you can write function stop, or you can write it in key value pair also. So stop, and then we'll create a function over here. What is this? It is a function, right? So like this also you can do. ये फंक्शन का नाम ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे दिया है ना. दिस इज फंक्शन स्टॉप. So key is stop and value is means it is a function. And here inside console.log you can do stop or stop. ठीक है. फिर कार में एक और फंक्शन होता है म्यूजिक, प्ले म्यूजिक. तो आप उसका भी फंक्शन बना सकते हो. म्यूजिक, ये प्रॉपर्टी क्या है? इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रॉपर्टी, इट्स अ फंक्शन. तो हमने इसको ऐसे फंक्शन बना दिया. एंड console.log playing songs. Okay. अभी normally if you want to print the details of the car, ठीक है, normally one property how we can access we have seen, car dot price. ऐसे हम लोग एक प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं. ओके, बट ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन व्यू कार डिटेल्स, अगर हमने एक व्यू कार डिटेल्स का बटन रखा है, उस पर क्लिक करने के बाद मुझे सारे डिटेल्स प्रिंट होने चाहिए. ओके, सो उसके लिए भी आप एक फंक्शन बना सकते हो. उसके लिए भी आप एक फंक्शन बना सकते हो, डिटेल्स फंक्शन console.log. यहाँ पे आप एक बार ही लिखोगे. once only you can write all the details of the car model. क्या आपका जो भी कार का मॉडल है, कार डॉट मॉडल. देन यू कैन राइट कार कलर, कार डॉट कलर. ऐसे सारे आप डिटेल्स यहाँ पे वन बाय वन यू कैन प्रिंट द डिटेल्स. प्राइस, जो भी वो कार का प्राइस है, कार डॉट प्राइस. ऐसे
ओके, सो ये इतने सारी चीजें आपको लिखनी है, तो बार बार नहीं लिखोगे आप, करेक्ट? इफ यू वांट टू रिट्रीव द इंस्ट्रक्शंस 3 टाइम्स, तो इतनी बड़ी लाइन आप 3 बार नहीं लिखोगे। आप उसको एक फंक्शन में डालोगे, एंड वेन एवर यू वॉन्ट द टू शो द यू वांट टू गेट टू नो द डिटेल्स, आप ये डिटेल फंक्शन को कॉल करोगे। सिंपल। सो इंस्टेड ऑफ console डॉट log car, you can do car डॉट डिटेल्स। ऐसे आप इसका फंक्शन यहाँ पे कॉल कर सकते हो। सी, कार मॉडल, कार कलर, कार प्राइस, डिटेल्स आपको दिख गए स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो बेसिकली वी कैन ऐड फंक्शंस आल्सो इनटू द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप की वैल्यू पेयर में प्रॉपर्टी लिख सकते हो, फंक्शन लिख सकते हो, बिकॉज एनी ऑब्जेक्ट हैज मल्टीपल फंक्शंस आल्सो। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, पेन है तो इट कैन राइट, पेंसिल है तो इट कैन ऑल्सो राइट, और इरेजर है तो इरेज कर सकता है, फोन है तो कॉल कर सकता है, कार है तो स्टार्ट स्टॉप पॉज प्ले म्यूजिक, ये सारी चीजें हो सकती है, राइट? सो देर आर फंक्शंस ऑल्सो इन ऑब्जेक्ट्स एंड देर आर प्रॉपर्टीज ऑल्सो। की वैल्यू पेयर इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, एंड इफ यू राइट अ फंक्शन, so a function inside an object is called as a method. Function inside an object is called as a method. ठीक है? Okay. All right. Um, we have taken a look at objects, and we have added functions inside the objects. We have taken a look at function, calling the function, and adding a few parameters to the function. Okay. We can continue with classes in JavaScript. Okay. Anyone, any idea what is a class in Java? Stop function की वैल्यू, की वैल्यू क्या असाइन होगी? स्टॉप फंक्शन कहाँ है? स्टॉप, सो स्टॉप इज द की, फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी वैल्यू मतलब ये फंक्शन, वी वांट टू डिक्लेयर और वी वांट टू से दैट ये जो स्टॉप है इसका ये फंक्शन है बेसिकली, तो वी वांट टू डिक्लेयर द स्टॉप एज अ फंक्शन। तो इफ यू कंसिडर स्टॉप एज की, दिस कोलन के आगे का पार्ट जो है वो उसका की हो गया। Okay, that we are declaring, that we are saying that this stop is a function, and we are writing a few lines of code inside the function, inside this block of code, ऐसे। ठीक है? Yes, anyone? What are classes in JavaScript? Or you, till now, if you have any doubt, you can ask the doubt, or you can uh, tell me what are classes in JavaScript. Anything will do. If you have any other doubt, you can let me. Yes. मैं Yes. यस, अगर हम फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, हमने यहाँ पे तो कंसोल लिखा है तो इट विल वर्क, हम्म ठीक है। आपको यहाँ पे अगर हमने रिटर्न यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना स्टेटमेंट है। लिखा तो फंक्शन का, फॉर एग्जांपल रिटर्न हमने 0 किया या रिटर्न 1 किया या कौन सा भी पैटर्न, हाँ यू हाँ कैन यस, डायरेक्टली, हाँ, तो फिर क्या रिटर्न द। होगा लाइक, अगर हमने कुछ ओके, रिटर्न किया फंक्शन से तो वो असाइन नहीं हो ठीक है, तो जाएगा अभी एज अ वैल्यू नहीं, टू दैट म्यूजिक की।
आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कैन यू राइट टाइप इट इन द चैट बॉक्स, आपका एग्जैक्ट डाउट क्या है? तो आपको यही पूछना है कि रिटर्न किया तो क्या होगा, और इज देयर मोर टू द डाउट? कर हाँ, वही पूछना है ना आपको। हाँ, तो अगर हमने रिटर्न किया है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई विल राइट म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करती हूँ, प्लेइंग सॉन्ग। हो गया। तो बेसिकली आपने अगर कुछ तो रिटर्न किया है एंड आपको उसको प्रिंट करना है, अगर अभी आपने console डॉट लॉग नहीं लिखा, ओनली इफ यू राइट कार डॉट म्यूजिक देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ओके, इन अदर केस अगर आपने यहाँ पे लिखा कार डॉट स्टॉप, ठीक है, हमने console डॉट लॉग लिखा है ऑलरेडी, इसलिए कार स्टॉप हमको दिखेगा। सो हियर आवर म्यूजिक फंक्शन हैज बीन कॉल्ड, बट ये जो रिटर्न की हुई वैल्यू है वो हमने कहीं कैच नहीं किया है। सो इफ यू राइट, अगर आपको ये प्रिंट करना है तो आपको कार डॉट म्यूजिक, एक तो फर्स्ट ऑप्शन इज यू हैव टू राइट दिस इनसाइड console डॉट लॉग। सो वट एवर वैल्यू है, so whatever value will be returned by this function, वो console डॉट लॉग हो जाएगी यहाँ पे, प्लेइंग सॉन्ग्स। सेकेंड ऑप्शन इज जब आप कुछ भी रिटर्न करते हैं तो यू हैव टू टेक अनदर वेरिएबल रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू कार डॉट म्यूजिक, एंड आपको करना पड़ेगा इसको देन console डॉट लॉग रिटर्न वैल्यू। नाउ यू कैन सी प्लेइंग सॉन्ग ऑल्सो। ओके, तो अगर आपने रिटर्न किया है कुछ वैल्यू एंड आप वो फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो हमने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया कार डॉट म्यूजिक, सो व्हाट वी आर रिटर्निंग प्लेइंग सॉन्ग्स। ये जो प्लेइंग सॉन्ग्स का स्ट्रिंग है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, रिप्लेस होके इट विल रिटर्न प्लेइंग songs over here. Now that we have saved in a variable and we have done console.log, और the option that I showed you console.log के अंदर ही डायरेक्ट आप car डॉट म्यूजिक को कॉल कर सकते हो। तो car डॉट इंस्टेड ऑफ car डॉट म्यूजिक ये कॉल होने के बाद आपको प्लेइंग सॉन्ग्स ये रिटर्न होगा एंड इट विल डायरेक्टली गेट console.log। दोनों में से डिफरेंट, एंड कार डॉट स्टॉप में, स्टॉप फंक्शन में ऑलरेडी हमने फंक्शन के अंदर ही console डॉट लॉग लिखा हुआ है। सो डायरेक्टली इफ यू कॉल कार डॉट स्टॉप तो इसके अंदर console डॉट लॉग ऑलरेडी है तो वो प्रिंट हो जाएगा। उसको आपको कुछ वेरिएबल कैच करने के लिए रिटर्न वाले, क्योंकि रिटर्न कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग। तो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, रिटर्न एंड console डॉट लॉग? उसको एक्सेस करने का मेथड कैसे डिफरेंट है वो देखा आपने? ओके, Yeah, I got it. ओके, ओके, ऑलराइट, चलो। एनी अदर डाउट एनीवन? Okay, what are classes in JavaScript? Any guesses, any idea? Okay,
ठीक है, चलो क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट. क्लासेस आर बेसिकली ब्लूप्रिंट. ओके, ब्लूप्रिंट बोल सकते हो आप, एक स्ट्रक्चर बोल सकते हो. जस्ट अ मिनट. Give me a minute. My laptop is getting hang. ओके, ठीक है. तो बेसिकली क्लास के अंदर भी वी कैन स्टोर डेटा ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक. फॉर एग्जांपल वी कैन क्रिएट अ क्लास ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, वी कैन क्रिएट क्लास स्टूडेंट. तो आपको स्टूडेंट का डेटा जो भी है, आपको स्टूडेंट का डेटा कैसे स्टोर करना है? हाउ डू यू, विच प्रॉपर्टीज विल बी देयर, हाउ यू वांट टू स्टोर द data of the students, what properties you want to include, that we will check. Okay. Okay. Mm. So in the class, to initialize the data, you have something called as constructor. Have you heard about the constructor before? Yes, you have heard about the constructor word before. Okay. Second hand, just give me a minute. ठीक है. So there is a constructor in every class where you can initialize our data. मतलब class student के अंदर I want to store the first name of the student, last name of the student, ID, what class the student is in, mm, age, year of admission, for example, etc. Okay. So basically, this is the data that I want to include, or in this is the structure how I want to store the information about my student. Talking about some functions.
function the in constructor you only initialize the data matlab ye variables. Okay, these variables, functions etc we will write outside the constructor. So if you want to get the student details, so you can get write the get details function over here outside the constructor. Okay, um etc. This is how we can write classes in JavaScript. It is a structure, it is a blueprint कि मैं कोई भी student कितना भी कितने भी students हो 10 20 100,000 whatever, all the students data will be saved like this. ठीक है, first name last name ID class age year of admission and then a few functions. ठीक है, let's create this class. So how to create a class? There is a keyword class name of your class, for example student. Then we will initialize the data. We'll write constructor over here, and we can store the first name. Just I'm showing you the example. This is not the correct syntax. Okay, first name last name class ID class name ID um, date of birth, for example. That's it. And then here you can write all the functions that you want to include. Okay. Now I will tell you a few basic concepts. Okay. About class, about object. So class and object are connected. Class and object are connected. Let me show you how. These are two, three objects, for example. Just give me 1 minute.
Okay, sorry, that was origin. All right. So, for example, you have three objects. Mm, car, um, phone, and what else? Car, phone, and laptop, for example. ठीक है. अभी ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर देर कैन बी सेम प्रॉपर्टीज. ठीक है, कार का भी नेम हो सकता है, मॉडल हो सकता है, कलर हो सकता है. ठीक है, फोन का भी नेम हो सकता है, मॉडल हो सकता है, कलर हो सकता है. ओके, सो ये जो फोन है, ये ऑब्जेक्ट नेम है. ठीक है, मैं इसको बोल्ड करती हूँ. ये कार ऑब्जेक्ट नेम है, मैं इसको बोल्ड करती हूँ. ये लैपटॉप है, इसको मैं बोल्ड करूंगी. ओके, सो कार, फोन एंड लैपटॉप. लैपटॉप का भी नेम, मॉडल और कलर हो सकता है, राइट. सो थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट बट सेम प्रॉपर्टीज, सेम नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज, सेम की ऑफ की वैल्यू पेयर में सेम की हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं. ओके, सो अभी फॉर एग्जांपल सबके अंदर एक फंक्शन है गेट डिटेल्स करके. ठीक है, गेट डिटेल्स के अंदर हम लोग लिखेंगे console dot log, फॉर एग्जांपल नेम प्लस मॉडल प्लस कलर. तो ये सेम चीज तीनों ऑब्जेक्ट में भी वैलिड है. ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स कैन डू द सेम, करेक्ट, गेट डिटेल्स में. ये तीनों ऑब्जेक्ट में दिस कैन बी अ राइट केस. ठीक है, सेम यहाँ पे भी. Now, your code, your browser, JavaScript will get confused कि your JavaScript will get confused कि यार ये जो नेम है, ये लैपटॉप का नेम लेना है, फोन का नेम लेना है, कार का नेम लेना है, कौन सा वाला नेम लेना है. दिस कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर योर कोड. यस और नो. ओके, तो इसके लिए देर इज वन सिंपल सॉल्यूशन एक्चुअली. तो क्या किया है यहाँ पे, दे आर यूजिंग दिस कीवर्ड, दिस डॉट नेम, दिस डॉट मॉडल, दिस डॉट कलर. आपने ये दिस कीवर्ड के बारे में सुना रहेगा. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस कीवर्ड? यस, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस कीवर्ड? यस और नो इन द चैट बॉक्स. हैव यू हर्ड? नो मतलब सुना है, डिटेल में नहीं पता रहेगा, इट्स ओके. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस कीवर्ड? कितने लोगों ने आपको डराया है कि ये दिस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है? किसी ने आपको डराया है ये दिस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, और यू फील दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कीवर्ड इज डिफिकल्ट? एनीवन? डिफिकल्ट है या नहीं? इफ यू राइट डिफिकल्ट, इफ यू फील इट इज डिफिकल्ट, यू कैन राइट डिफिकल्ट. हैव यू हर्ड दैट दिस कॉन्सेप्ट इज डिफिकल्ट? अच्छा, ओके.
सिंपल सा लॉजिक है। सेम सम ऑब्जेक्ट्स कैन हैव मल्टीपल सेम प्रॉपर्टीज, तीनों ऑब्जेक्ट में सेम प्रॉपर्टीज है। डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तीनों ऑब्जेक्ट्स में सेम प्रॉपर्टी हो सकती है। एक ही ऑब्जेक्ट का नेम हो सकता है, तीन तीन ऑब्जेक्ट के नेम हो सकते हैं, कलर हो सकता है, मॉडल हो सकता है, एक्सेट्रा। तो योर कोड विल गेट कंफ्यूज कि आपको जब उसके डिटेल्स प्रिंट करने हो, आपको उसके डिटेल एक्सेस करने हो, या उसके फंक्शन में आपको उसके कुछ भी प्रॉपर्टी यूज करनी हो। तो अभी नेम, फोन का भी नेम है, लैपटॉप का भी नेम है, कार का भी नेम है, कौन सा एक्सेस करे? कैन दिस बी कंफ्यूजिंग? इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। सो क्या कॉन्सेप्ट निकाला? whenever you use this keyword, this मतलब it will give the reference of your current object। current object मतलब अभी देखो, ये this keyword नेम के आगे लगा हुआ है, तो ये आपका जो भी फंक्शन है, गेट डिटेल्स फंक्शन, वो कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर है? कार ऑब्जेक्ट के अंदर है। इट इज इनसाइड द कार ऑब्जेक्ट। So this keyword will keep on pointing to your car object. Always this keyword will keep pointing to your car object. And ये ऑब्जेक्ट के अंदर आपने this keyword यूज किया, कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर रहे हो उसका ट्रैक रखेगा बेसिकली। आप this कीवर्ड कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर रहे हो उसका वो ट्रैक रखेगा। सेम थिंग you can do for your laptop or all the objects। this dot name, this dot model, this dot color। तो अभी ये जो this कीवर्ड है, ये चेक करेगा कि मैं कौन सा ऑब्जेक्ट के अंदर हूँ, लैपटॉप ऑब्जेक्ट के अंदर हूँ। तो नाउ दिस कीवर्ड विल कीप पॉइंटिंग टू द लैपटॉप का ऑब्जेक्ट। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। गेट डिटेल्स ये वाला जो है दिस डॉट मॉडल, ये दिस के अंदर पूरा लैपटॉप का ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, तो और लैपटॉप के अंदर का ही मॉडल वो सिलेक्ट करेगा। इधर उधर नहीं जाएगा, फोन का मॉडल नहीं लिख देगा गलती से, कार का मॉडल नहीं लिखेगा गलती से। इट इज इनसाइड द लैपटॉप ऑब्जेक्ट। That's why the this keyword has the details of laptop object। and dot model मतलब आपके लैपटॉप का मॉडल ही सिलेक्ट होके प्रिंट होगा। Let me show you the example for this। phone is equal to model, ठीक है, कंपनी एप्पल, कलर ब्लू फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपका फोन का ऑब्जेक्ट हो गया। लेट लैपटॉप इज इक्वल टू मॉडल सरफेस प्रो वट एवर इट इज। फॉर एग्जाम्पल कंपनी हो गई माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, कलर हो गया व्हाइट। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, सेम उसके अंदर प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। ओके, अभी फोन के लिए भी मैं गेट डिटेल्स का एक फंक्शन लिखूंगी। गेट डिटेल्स के फंक्शन में क्या करना है, आपके फोन का जो भी प्रॉपर्टीज है वो मुझे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। कंसोल डॉट लॉग, मॉडल जो है आपका वो आप लिखोगे दिस डॉट मॉडल। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आई विल जस्ट प्रिंट दिस कीवर्ड। यहाँ पे भी मैं सिर्फ दिस कीवर्ड प्रिंट करूंगी, और यहाँ पे भी
Same, exact same function. I will just copy paste over here. Okay, we will see. Any guesses? 230 लाइन में क्या प्रिंट होगा and 239 लाइन में क्या प्रिंट होगा? Any guesses? What will happen? Same, only this keyword. Dot नहीं, कुछ नहीं दिया है मैंने. सिर्फ I am printing this keyword in inside both two different objects. Yes, line number 230. फोन क्या होगा? फोन मतलब फोन प्रिंट होगा. फोन वर्ड प्रिंट होगा और लैपटॉप वर्ड प्रिंट होगा. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ओके, ठीक है, लेट अस सी. चलो, लाइन नंबर अच्छा सॉरी, इसको कॉल करना है, कॉल करना पड़ेगा इसको. फोन डॉट गेट डिटेल्स. लैपटॉप डॉट गेट. तो लाइन नंबर 230 में पूरा आपका फोन का ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है. पूरा फोन का ऑब्जेक्ट, कलर, कंपनी, मॉडल, गेट डिटेल्स का फंक्शन. एंड लाइन 241 में पूरा लैपटॉप का फंक्शन प्रिंट हुआ, लैपटॉप का ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है. विच मीन्स ये वाला जो दिस कीवर्ड है, इट विल चेक कि मैं कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर हूँ. ठीक है, तो ये गेट डिटेल्स लाइन चेक करेगा, नहीं ये तो फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है. अच्छा, आई एम इनसाइड द फोन ऑब्जेक्ट. सो ये दिस कीवर्ड में पूरा का पूरा फोन का ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा. सेम विद दिस लैपटॉप. ये जो दिस कीवर्ड है यहाँ पे, इट विल चेक कि मैं कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर हूँ एंड इट इज इनसाइड द लैपटॉप ऑब्जेक्ट. सो एंटायर लैपटॉप ऑब्जेक्ट will get stored into this keyword. Now it is very easy. यहाँ पे I can access. If I want to access the model of your phone, I will write over here. Model of phone is this dot model. If you hover over this keyword, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा मॉडल, कलर, कंपनी, गेट डिटेल्स. ठीक है. नेक्स्ट, company is this dot company and color of, and just ठीक है, color is this dot color. ये same line I will copy and paste over here. Laptop, company and color. Now see, model of phone is iPhone 16, model of laptop is Surface Pro, company is Apple, company is Microsoft, color is blue, color is white. Just because of this keyword, सारा confusion खत्म कि मुझे ये वाला जो मॉडल है, ये मुझे लैपटॉप का मॉडल प्रिंट करना है, फोन का प्रिंट करना है, क्या करना है. ओके, सो दिस कीवर्ड ऑलवेज रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट. करंट ऑब्जेक्ट मतलब कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर है वो पूरा ऑब्जेक्ट ये रेफर करेगा. वो पूरे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दिस कीवर्ड के अंदर स्टोर होने वाली है. एंड आप फिर उसमें से सारे इंफॉर्मेशन में से जितना भी आपको चाहिए वो एक एक प्रॉपर्टी आप यहाँ से सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो या यूज कर सकते हो. दिस कीवर्ड इज क्लियर. चलो, इसमें डाउट है कुछ तो पूछो.
डिफिकल्ट लगा? इज इट डिफिकल्ट और इट इज अ वेरी सिंपल लॉजिकल concept? Was it difficult? चलो, if you have any doubt you can ask the doubt this keyword में, object में. Is it clear for everyone? Is it easy or difficult? Confusing or easy? Yes. चलो. All right. ठीक है. We are done with this keyword. Let's come back to class. तो क्लास में जो ये सारे प्रॉपर्टीज है, यूजुअली हम लोग बेसिकली व्हाट इज द सिंटैक्स. तो इंस्टेड ऑफ दिस वी राइट ऑल दिस थिंग्स इन इनसाइड कंस्ट्रक्टर यूजिंग अ कॉमा. कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, all that information we write inside the constructor like this using a comma as a parameter basically. Hmm? Now here how we initialize the data. Again, this dot first name is equal to first name. To this keyword का class के अंदर क्या relevance है that I will tell you slowly. ठीक है? This dot last name is equal to last name. This dot class name is equal to class name, and this dot id is equal to id. This dot b ob is equal to date of birth. ऐसे हम लोग डेटा यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं. ठीक है. पैरामीटर क्यू को हम लोग कॉल करने वाले हैं, दैट वी विल सी. ठीक है. बट कंस्ट्रक्टर में ये आपको जो भी इंफॉर्मेशन क्लास के अंदर स्टोर करना है, दैट यू विल राइट इन द इंस्ट्रक्टर इन द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, एंड यूजिंग दिस कीवर्ड ऐसे आपको ये डेटा इनिशियलाइज करना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द सिंटैक्स फॉर नाउ. क्यू कैसे, कब, कहा, वो हम लोग देखेंगे. उसके बाद अगर कुछ फंक्शंस है, गेट स्टूडेंट डिटेल्स है, अगर आपने यहाँ पे उसके मार्क्स भी ऐड कर लिए हैं तो कैलकुलेट एवरेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास नेम हो गया. चलो क्लास छोड़ो, लेट्स नॉट टेक द क्लास नेम. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी. दो तीन मार्क्स ले लेते हैं हम लोग. हिंदी के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, साइंस का मार्क्स. ओके. दिस डॉट हिंदी इज इक्वल टू हिंदी. सीक्वेंस में आएगा, ठीक है. तो सीक्वेंस में नहीं आया कभी. डेट ऑफ बर्थ के बाद है फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, आईडी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, हिंदी हो गया. दिस डॉट मैथ्स is equal to maths. This dot science is equal to
ठीक है, तो ये हमारा सारा डेटा है, ये इनिशियलाइज हो गया। फंक्शंस मीन्स फॉर एग्जांपल कैलकुलेट एवरेज, मतलब एवरेज मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे पास मार्क्स है उन सबका एडिशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, सो हियर यू कैन डायरेक्टली राइट दिस डॉट हिंदी प्लस दिस डॉट मैथ प्लस दिस डॉट साइंस डिवाइडेड बाय 3। तो ये हम लोग एक वेरिएबल में सेव करते हैं, लेट एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू इस, ये सब का एडिशन प्लस divided by 3, okay, divided by 3, and then we can return और console dot log रिटर्न करते हैं रिटर्न एवरेज मार्क्स। ठीक है, ये एक हो गया फंक्शन। ऐसे ही आप स्टूडेंट डिटेल्स का भी फंक्शन लिख सकते हो यहाँ पे, console dot log आप यहाँ पे सारे स्टूडेंट का डिटेल्स लिख सकते हो। ठीक है, यूजिंग दिस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। सो बेसिकली दिस इज हाउ यू राइट अ क्लास। डेटा इनिशियलाइज हो गया, फंक्शंस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये क्या होगा, इसका प्रिंट होगा स्क्रीन पे। व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हाई डू वी यूज दिस? एक्चुअल डेटा है इसके अंदर, किसी स्टूडेंट का नाम दिख रहा है, मार्क्स दिख रहे हैं, आईडी दिख रहा है, नहीं, एक्चुअल डेटा भी नहीं है, ये स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे या यहाँ पे आपको दिखेगा भी नहीं। देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? एनीवन? जावास्क्रिप्ट के क्लासेस का क्या यूज होता है? क्या है इसका? मैंने ये लिखा, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, एक्चुअल डेटा नहीं है उसमें, कुछ रियल डेटा, क्या यूज क्या है इसका? एनीवन? So as I told you, class is a blueprint, class is a structure of how I want to store the data. Objects are, मैंने ऊपर लिखा था, if you don't remember or if you remember, uh, objects are instances of class. So using this class structure, we will create new student objects. Using this class, we will create. So हमने array कैसे लिखा था? Array is equal to new object, ऐसे लिखा था। Similarly, now I want to create a new student. Structure होगा basically. Now let me add some real students in my class. Let student 1 is equal to new. I want to create a new object. So new, and which structure I want to follow? ये स्टूडेंट का क्लास स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। Let student 1 is equal to new student. अभी when I hover my array on the student, ये देखो क्या क्या आपको उसके अंदर पास करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। So first name of my student, for example, Riya. Last name is whatever, Shah. ID 100. Date of birth. Whatever, 12 to 99. Then marks number, marks we have to enter. Marks can be numbers. हिंदी में 60 for example, फिर 70, फिर 88, whatever it is.
ठीक है. So this I have created a actual new student, actual information of the student I have passed. Now so अभी समझ में आया कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स क्यों. These values will directly go inside this parameter का value. Riya will go into first name, Shah will go into last name, ID will go into 100 will go into ID, फिर date of birth, हिंदी, maths and science. ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं हम लोग. That's why we are initializing our data like this. So objects हम लोग बेसिकली दिस कीवर्ड हमको लगता है ऑब्जेक्ट्स में वी सॉ राइट नाउ. ये एग्जांपल में हमने देखा दिस कीवर्ड. ओके. सो दैट्स व्हाई we are initializing our data like this dot first name. this मतलब करंट ऑब्जेक्ट. करंट ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर है ये this कीवर्ड स्टूडेंट के. स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू हम लोग जो एक्चुअल फर्स्ट नेम भेजेंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होगा this dot first name is equal to Riya. Like this it will get stored over here and rest all the information similarly. फिर हो गया आपका कैलकुलेट एवरेज है स्टूडेंट है. ये आप कैसे कॉल करोगे. हाउ यू विल कॉल दिस. स्टूडेंट वन डॉट कैलकुलेट एवरेज. तो अभी हमने यहाँ पे रिटर्न किया है तो जो भी रिटर्न वैल्यू आएगा इधर वी कैन स्टोर इट इन अ वेरिएबल और डायरेक्टली वी कैन डू कंसोल डॉट लॉग ओवर. देखते हैं चलो. 72.6666. This is the average marks. Maths plus Hindi plus science के marks divided by 3. This is the average marks of that student. ठीक है. Clear? If you want to create a second student, you will write student 2 is equal to new student. And then जो भी सेकेंड स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रहेगा 101, date of birth we will change, marks we will change a little bit. This is your second student. सेकेंड स्टूडेंट का आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो आप दो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करोगे स्टूडेंट टू डॉट कैलकुलेट एवरेज. तो स्टूडेंट टू भी ऐसे ही बनेगा. स्टूडेंट टू वी हैव क्रिएटेड यूजिंग स्ट्रक्चर ऑफ आवर स्टूडेंट क्लास. तो जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है वैसे ही नाउ दिस डेटा विल गेट स्टोर्ड एंड अ सेकेंड स्टूडेंट विल बी created. If you write console.log, थोड़ा मैं यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ. And here I will print both the students. Console.log student 1, console.log student 2. सी ये स्टूडेंट 2 का एवरेज है, ये स्टूडेंट 1 का एवरेज है एंड ये दो स्टूडेंट के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं यूजिंग द क्लास. तो बेसिकली क्लास एक इंस्ट्रक्शन बुक बोल सकते हो आप. क्लास एक स्ट्रक्चर है नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. तो these two new student objects have been created with the guidelines of the student class. ये देखो रिया ये सारे मार्क्स, अतुल ये सारे मार्क्स. These two objects have been created using the class student. चलो क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर है.
Classes is clear. Any doubt? Okay. I'll wait in the session. You can practice practically whatever we have studied, whatever we have seen today, and then we can continue later. Okay? You will have a practice session now. Practical. थियोरेटिकल आप कंटिन्यू करने वाले हो क्या सेशन 1 इसके बाद, प्रैक्टिकल के बाद? नहीं नहीं, अभी प्रैक्टिकल होने के बाद वी विल कंटिन्यू टुमारो. ओके, थैंक यू. Okay? ठीक है. Yes, you if you are in office, you can do practical. You can do it later. Others, you can start with the practical. मैम वो ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक रिपीट करेंगे क्योंकि उस वक्त मैं ज्वाइन नहीं कर था. ऑब्जेक्ट वाला ओके. ओके, ठीक है. सो बेसिकली objects in JavaScript are in key value pairs. ठीक है, key value. तो objects in JavaScript are just like objects in a real life. phone है, iPad है, laptop है, pen है, pencil है, whatever it is, right? So every in a real life also objects have some property. Our phone had some name, model, color, etc. Okay, so we can create an object car. This is the syntax, let car is equal to, and in the curly brackets you can write all the properties. So it is in key value pair. So first property is color, jiska value is red, model, jiska value is I-20, company, etc, etc. Okay, and you can also include functions into the objects. जैसे कि हमारे objects है car है, तो in real life also car can function has different functions. Basically it can start, stop, it can turn on the music, you can get the details of the car, etc. So you can add functions also in the objects in key value pair. So basically stop नाम का एक function बनाया है, उसकी value क्या दिया है मैंने कि ये function है, and whatever steps you want to perform inside that function, that you can write like this. So objects look like this. बट आपको अगर ऑब्जेक्ट्स का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, 100 कार्स है, 200 कार्स है, तो again and again you, so basically what you can do is you can create a common structure. जैसे हमने स्टूडेंट के लिए बनाया है यहाँ पे, if you want to create 200 students, तो बार बार आप ये सब नहीं लिख सकते, कलर ये, मॉडल ये, this writing 200 times and writing this just one line 200 times, it makes a lot of difference. तो इसका जनरल कॉमन स्ट्रक्चर मतलब हमारा क्लास होता है. ओके, so yes, these are objects in JavaScript. This keyword तो मैंने अभी आपको बताया है, that is related, whatever is related to the object. And using dot operator you can access the properties and functions inside the object basically. तो अगर मुझे मॉडल एक्सेस करना है तो आई विल राइट console.log car.model. सो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डॉट देके उसके आगे आप उसका फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हो, आप उसका प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकते हो.
That's all. These are objects in JavaScript. Yes, ma'am. Clear? Okay. Yes, So you'll start with the practical. yes, ma'am. ठीक है? I am right here. If you have any doubt, you can just unmute and ask. And if you are done, you can also tell me. You can unmute and you can tell me that you are done. Okay, I am right in the meeting right here. Okay.
मैम मैम हेलो मैम हेलो हेलो, मैम एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? एक मिनट, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। आप देखो, हो सकता है कि आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ, एक मिनट मैम। हो रहा है क्या स्क्रीन शेयर, या मेरा ऑफ करना है? एक मिनट में। मैम यस। यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड बोल रहा है ये कॉमा, लेकिन कहाँ पे ऐड करना है? एक मिनट। क्लास, आप क्लास बना रहे हो तो लेट नहीं, आपको क्लास कीवर्ड यूज करना है, क्लास स्टूडेंट। इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, देखो, गो टू द कोड। क्लास का है आपका, कैलकुलेट एवरेज स्टूडेंट। नहीं, स्टूडेंट डॉट कैलकुलेट एवरेज नहीं होगा, आपने स्टूडेंट वन बनाया ना, ऑब्जेक्ट बनाया वो स्टूडेंट क्लास का, तो स्टूडेंट वन डॉट कैलकुलेट एवरेज होगा वो नीचे। हाँ, कंसोल डॉट लॉग पे स्टूडेंट वन डॉट कैलकुलेट एवरेज। नाउ चेक। हिंदी इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पे आया है वो एरर, देखना पड़ेगा। 30, लाइन नंबर 30।
नहीं 35 okay, let me see. Line number 30, let average this dot हिंदी, नहीं सिर्फ दिस डॉट हिंदी आएगा, इज इक्वल टू नहीं आएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा, ओनली दिस डॉट हिंदी यू हैव टू एक्सेस, ऊपर इज इक्वल टू है एक बार, दैट इज राइट। दिस डॉट हिंदी प्लस करना है ना आपको, दिस डॉट हिंदी प्लस मैथ्स प्लस साइंस, कॉमा नहीं आएगा, प्लस ऐड करना है, एवरेज का फॉर्मूला है, आपको सारे सब्जेक्ट्स प्लस करके उसको डिवाइड बाय 3 करना है। ओके चेक ना, अब कहाँ एवरेज मार्क्स नॉट डिफाइंड, हाँ आपने वेरिएबल का नाम देखो एवीजी लिखा है, रिटर्न एवरेज मार्क्स किया है, सो दैट शुड बी द सेम। हाँ ओके ठीक है। Yes, ma'am. यस ये स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स were there. Okay, yeah. ma'am. Clear? Yes, ma'am, clear. ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? No, ma'am. अभी तक तो नहीं, आगे और करना है प्रैक्टिस, बाद में फिर अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो कल के सेशन में। चलेगा, ऑल राइट, ओके ओके, विल कंटिन्यू टुमारो, Thank you, यू ma'am. Yeah, प्रैक्टिस ma'am. एंड Thank if you. you have any doubt you can ask later. Yes, ma'am. Okay, all Thank right, you. thank you, bye. Bye.